लगातार एकादश थर पर सुधहार अपरिवर्तित रखिले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उभय रेपो एवं रिवर्स रेपो रेट अपरिवर्तित रही। रूसिया यूक्रेन युद्ध जोगु अंतर्जातीय बजार में अस्थिरता लगी रही मुद्रास्फीति उच्चा रही, जो भारतीय अर्थनीति को सुरक्षित रखा सर्वोच्च बैंक एभली पदक्षेप नहीं। 2022-23 आर्थिक वर्ष पूर्व आकलन करा मुद्रास्फीति एवं अभिवृद्धि हार में किछिटा परिवर्तन आनी आरबीआई आर्थिक नीति संपन्न कमिटी। तेबे लिक्विडिटी रे स्थिरता आनिबा को प्रथम थर पर लागू होईची स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी। पुणी सुधार अपरिवर्तित रखिले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रो आर्थिक नीति संपन्न कमिटी पुणी रेपो रेट 4% एवं रिवर्स रेपो रेट 3.35% रे अपरिवर्तित रखिछंती। कोविड स्थिति रे अनेक सुधार आसीथिले मध्य विभिन्न दिगरु अंतर्जातीय अस्थिरता जोगु मुद्रास्फीति उच्चा रहिछि। रूसिया यूक्रेन युद्ध कारणरू अंतर्जातीय बजार में तैल दर उच्चा रही, जार प्रभाव सारा विश्व में पड़ता बेले घरोई बजार सबु क्षेत्र मध्य प्रभावित होइछि, जेउथिपाई एभली स्थिति रे भारतीय अर्थनीति को सुरक्षित रखा पुणी सुधार अपरिवर्तित रखिले आरबीआई। रेपो रेट अपरिवर्तित रहितिबा कारणरू साधारण लोकंकु हेबो सीधासळख फायदा, कारण बैंक माने मध्य सुधार रे परिवर्तन आनिबे नाही। फलरे ऋण नैथिबा लोक माने ईएमआई रे किछि असुविधा सामना करिवे नाही। से भली रिवर्स रेपो रेट अपरिवर्तित रहितिबा जोगु बैंक गुड़िक पाखरे यथेष्ट टंका रहिबो, जहा प्रकारांतरे अर्थनीति को सहायक हेबो। प्रथम थर पई स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी व्यवस्था बा एसडीएफ लागू करिसंती आरबीआई। बजार रे लिक्विडिटी रे स्थिरता आनिबा को एसडीएफ व्यवस्था लागू होईछि। 3.75 सुधार रे लागू होईछि एसडीएफ। से भली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बा एमएसएफ 4.25% रे स्थिर होईछि। The MPC sifted through domestic and global conditions and evaluated their unfolding impact on the overall outlook for India and the world. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4% and continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also stands unchanged at 3.35%. I thank the MPC members for their valuable contributions to the policy decision taken today. पूर्वर आकलन होइथिबा अभिवृद्धि हार रे परिवर्तन आनिछंती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2022-23 आर्थिक वर्ष रे अभिवृद्धि हार 7.8% हेबो बोली पूर्वर आकलन होइथिला, जहाकु एबे 7.2% को खसाई अणा जाईछि। सेपरि पूर्व आकलनर मुद्रास्फीति रे मध्य परिवर्तन आनिछंती। 2022-23 आर्थिक वर्ष पई पूर्वरु मुद्रास्फीति 4.5% आकलन होइथिबा बेले वर्तमान ताहा 5.7% हेबो बोली कुहा जाईछि। रूसिया यूक्रेन युद्ध पाई विश्व अर्थनीति प्रभावित होइथिबा बेले सेथिरे सुधार आसिबाकू समय लागिबो, जेउथिपाई पूर्वरु आकलन होइथिबा अभिवृद्धि एवं मुद्रास्फीति रे परिवर्तन अणा जाईछि। सेपरि सीपीआई मुद्रास्फीति 5.7% आकलन होइछि। The World Trade Organization has estimated that the volume of merchandise trade shrank by 3% year on year in Q1, and early estimates suggest a fall of 18.5% in Q2. CPI inflation remains largely subdued across major advanced economies, primarily due to benign fuel prices and soft aggregate demand since March. In most of the emerging market economies, however, CPI inflation after easing in April and May rose in June amidst cost push pressures. Domestic food inflation remains elevated across most of the economies since the onset of the pandemic. The MPC noted that in India too, economic activity had started to recover from the lows of April and May. However, surges of fresh infections have forced reclamping of lockdowns in several cities and states. Consequently, several high-frequency indicators have leveled off. यूरोप रे अस्थिरता विश्व अर्थनीति को प्रभावित करिथिले मध्य भारतीय अर्थनीति को ट्रैक रे सुरक्षित रखिबाकू आरबीआई नजर रखितिबा कहिसंती गवर्नर शक्तिकांत दास। यूरोप अस्थिरता एक चैलेंज, तथापि कोरोना बेले गत 2 वर्ष रे आरबीआई जेउ भली पदक्षेप नैथिले सेति प्रस्तुत रहिसंती। केवल आईन को अनुसरण करी नुहे परिस्थिति देखि पदक्षेप नेबाकू पड़िबो।
मूल्य रे स्थिरता आनिबा सह अभिवृद्धि एवं आर्थिक स्थिरता उपरे गुरुत्व देबाकू सर्वोच्च बैंक प्रस्तुत थिबा कहिसंती गवर्नर शक्तिकांत दास। The agriculture sector's prospects are strengthened by the progress of the southwest monsoon and the expansion in the total area sown under kharif crops by 13.9% up to July 31 over the previous year. That is over the corresponding period of the previous year. Industrial production remained in contraction, albeit at a moderated pace in May. The Manufacturing Purchase Managers Index PMI shrank in July for the fourth consecutive month. PMI services remained in contractionary zone in July, although the downturn eased relative to the June reading. Headline inflation, which was 5.8% in March, was placed at 6.1% in the provisional estimates for June 2020. Inflation pressures were evident across all subgroups. Households 1 year ahead inflation expectations were lower than their 3 months ahead expectations in July 2020 round of the Reserve Bank's survey. कोरोना बेले बजार रे आर्थिक स्थिरता संतुलित रखिबाकू आरबीआई बैंक गुडी को टंका देथिले। तेबे वर्तमान बजार रे लिक्विडिटी 8.5 लाख कोटी टंका अधिक अछि, जाहाकू परिस्थिति देखि धीरे धीरे आरबीआई फेराई नेबे बोली कहिसंती शक्तिकांत दास। Against this backdrop, the MPC was of the view that supply chain disruptions on account of COVID-19 persist, with implications for both food and non-food prices. A more favorable food inflation outlook may emerge as the bumper Rabi crop harvest eases prices of cereals, especially if open market sales and public distribution offtake are expanded on the back of significantly higher procurement. Nonetheless, upside risks to food prices do remain. The abatement of price pressures in key vegetables is delayed and remains contingent upon normalization of supplies. Protein-based food items could also emerge as a pressure point. High domestic taxes on petroleum products have resulted in elevated domestic pump prices and will impart broad-based cost push pressures going forward. कोरोना परे अंतर्जातीय अस्थिरता अर्थनीति पई चैलेंज होइथिबा बेले लगातार एकादश थर पई सुधार अपरिवर्तित रखिछंती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 ओडिया।